Hey guys, how's going? Let's just wait for others to join. Yes, hello, hello. Good evening. We will start in 3 minutes. Yes, screen is blank because I'm not sharing my screen. Uh, team, can you please tell me my screen is visible or not? Because I'm not sharing my screen. Is it blank or something else? Please tell me. How to turn on? You don't have that permission to turn on the mic. Black screen is visible. Okay, okay. Let me fix this. Okay, that problem has been solved. Just because I'm not sharing my screen, it is visible blank.
39, 40 attendees are there. Good count to go, है ना? It's already 7:05. The whole black screen is visible. Why is it? So I don't know this. Okay, let me share my screen. Tell me, guys, is it visible now? Is it visible? My screen is visible now. Okay, okay, nice. So, is the word screen is visible? Team, please take care of this Ayush message. Okay, yes. So, guys, let me introduce myself first. Let me open my camera to interact with you all. Okay. So here I'm Madhunika Nilakhe. I'm currently working in Accenture Technology. My job is associate software engineer, and here I'm for next 3 days, today and next 2 days, for teaching you. Not teaching. I must say we are discussing about HTML and CSS. More to learn. You also learn. I also get knowledge from you. And first day as of now. So here is the day one syllabus. So first day, whole HTML would be there, from introduction to covering all the attribute stacks of the HTML, including forms are there, how to import images. Some interesting fact is how to import the maps in your web pages, how to import YouTube videos. So let me just off my camera because it's lagging. So let's just start. Can we start with the voice is lagging? My voice is clear. Just tell me. Okay, okay, okay. Let us just start with the first. What is introduction to the web development? है ना? You all know about what is web development. Creating some useful and responsible websites is known as a web development. But as we all know, web development is uh, becoming a very crucial in IT sector today, uh, because of the industry demands of web developer more. Just tell you one thing. Web development careers are provided by the industry that are uh, front end web developer, back end web developer. Front end developer basically works on the UIs, which is designs. Back end developers work on with the UIs and as well as the backend, that is database, uh, and the languages used for the UI, that will be HTML, CSS. Uh, some of the libraries are there, React and AngularJS. Backend developer use the programming languages like JavaScript, Python, PHP,
and so on. The first part is career opportunities have been completed. How to become a master in web development. You will all have a question to how to start with the web development, है ना? So here we are here for the boot camp of the HTML and CSS, which is the basic of the web development, है ना? HTML is basically a hypertext language. Hypertext is basically known as what is a text which is more than a normal text, which is understood by the machine. When we open, let me just open my notepad. So uh, my screen is visible. Let me just tell. Yes. So what is HTML? What is HTML? So let's just start with its full form, like one by one letter. What is H stands for? What is H stands for? Hypertext. Hypertext. It includes T also. Hypertext. M stands for markup and L stands for language. Okay. What is hypertext means? Hypertext means something is not a normal text which has a meaning other than a normal text, which includes the hyperlinks, which includes the font in various sizes, the text in various sizes, which includes the images also, which includes your videos and so on. So this is known as a hypertext, and HTML provides us with the various tags that are useful for the various different purposes. That some tags are for the specific purpose only. They tell us to use that tag for this purpose only. So let's just go ahead with the markup. What is markup is actually markup is provides additional information what is your text is. Okay. Basically it means uh, giving your text a font, giving your text a various font size, giving your text a position which is center alignment, padding from left to right, margin from left to right, top bottom. So this is known as a markup. So language basically means communication for. So let us go ahead. So next is syntax of the HTML. So let me open. Let me just tell you guys what is how the HTML page is debugging on. We can say how the HTML page is rendered on the web page. So here I save this file. I will save this file. Let me clear one folder of name day one, bootcamp day one. I will save this file. This format is text file. I'm saying when I go to that file explorer, I locate that file and I will see this is the normal text file, which extension is .txt. But let me just save this file again as extension of HTML. Let's just see what happens. So saving this as HTML. Now you can see here. Now you can see its icon is changed to the Chrome, which is my default browser right now. When we click on this
file, double click on this file. Browser with my page and which showing me my HTML text which I have written in this file. Are you guys with me? Now are you guys with me? Okay. Are you guys doing this all simultaneously with me? Please do this. You will get a more hands-on practice. Rupali, then start with me. Start doing simultaneously with me. Okay? Yes. What to do? First, open your notepad and type down some text. Save this file as a txt. Clear? Save this file as txt. And then again saved it as .html. And then see what is difference between normal text file and HTML text file. Normal text file is when I double click on this file, my HTML notepad is open. But when I double click on this HTML.html file, my browser renders my file and showing me a text which I have written in my file. Okay, clear? Clear, Rupali? Okay, nice. So let me just add some text here. Let's just start with the hello world. The developer's favorite word, that is hello world. We all start with our first project. We all start our first anything in developing. We start with the hello world. I'm saving this file. And now again, I'm locating my file and double click on that. Every time I should not double click, I should refresh this file. Okay, so let me just move to it's so now it is okay. So as of you can see I'm written a hello world. In the next line there is a line break, but my web page is showing me in a one line. Here is the concept of the HTML comes in. It is just a normal text which I have written in the notepad, which is not understand. This is not understandable by the your browser. What actually I have written, it just understand what is the words, but this gap between this line spacing, this is not understood by the browser, just because it is not in a proper format of the HTML. So just have a proper format of HTML. So firstly let me ask you guys, all of you have a VS Code installed on your PC or not? Just tell me yes or no. All of you have a VS installed on your laptop, right? So just because of the time constraint, I'm fastly opening my VS Code. Also, guys, simultaneously do this all things with me. This is not gonna repeat. I'm telling again. Let me start. My wallpaper is of Thar. This is not my laptop. This is my brother's laptop actually. So when you open your VS Code, you will see this screen. Okay. You will see this screen and let's just create a one folder.
Inside, where should I? Okay. Mm, Documents. Here, I'm creating my folder, which is of Bootcamp. Inside it, I'm creating one another folder, which is day 1. Okay. So selecting this folder. So yeah, just create a one folder and open it. Just create a one folder in VS Code and open it. Sublime Text 3. I prefer to use a VS Code because we are gonna use a live server there, which I don't think so there is in Sublime Text. I don't know. Uh, okay, just go ahead. Create one file, index.html. So here, index.html file is open. I'm telling you one shortcut of creating a HTML base syntax. Just hit exclamatory mark and just hit enter. This VS Code will automatically create uh, the syntax of HTML, basic code of the HTML for you. Let's just understand what is quickly understand what is in this code. So first, basically, dot type HTML is telling what version we are using the HTML code here, the type of this document. So it is HTML. So HTML lang is an attribute, and en is a value of that attribute. Language, what language we are using in HTML code? That is English by default. So here is the head. The basic. Let me just tell you guys the basic of the HTMLs are. Let's just call this HTML as human. Okay, human has one head and body, है ना? So head, it has head and it has body. Okay, so what this human is gonna do? So inside the head we have the other elements, we can say tag also. So here meta tag giving the additional information about the document. What char set means, character encoding we are using to understand browser, to understandable by the browser what we are actually written. So here it is HTTP. Okay, this is for Internet Explorer. It should compatible for the previous versions also. I don't know who is using Internet Explorer nowadays, so I removed that. So next is a viewport. Viewport is actually a, so let's just take one example of a website. Take Amazon. So what is in this white area? है ना? What is in this white area is known as your viewport. That it is visible for your audience, visible for your users, and its content has a width is equal to device width. It telling browser that yeah, I'm giving a width that it should be a device width. Whatever device I have using, it should be compatible with that device. So initial scale is 1.0. That is if I'm giving a size of 5px 5 pixel, so it should be displayed on the browser 5 pixels only, the multiplier of 1.0. So let's just move ahead fastly. Title of the document should be what should I give? My website. I hit entered. Now right click on this index.html
Let's just run this file. Run this file. Okay, Chrome. So now you can see my file is rendered and title of the website. Title of the website is what? Which I have this my website. My website is displayed on this. You guys are seeing, watching this. So let's just add some text here. This is my first project. Hit enter. Let's make it worth. Hit enter and refresh the page. So this is written in format which we have written in the notepad. Okay. As so just start with the next topic. Installing VS Code, starting with the opening folder have been done. So basic of the HTML. Let's just start with the heading tags. So HTML provides the different tags. Okay. So every tag has a meaning attached to it. Different tag has a different meaning attached to it. Oh, sorry. Let's just delete this. Don't save. Mm, delete, delete. Please repeat it again. How to import this code? Explaining Hindi. Is Hindi preferable or I can speak in English only? Both will be the better option. Okay, okay. How to import this code? Just uh, type exclamatory mark, and hit enter. Understand, Ankita? Exclamatory mark and hit enter. This will automatically create the basic HTML code for you. To just go ahead with the HTML tags. Guys, please understand me. I'm not an expert of teaching. I also make a mistake. So just let's start with the HTML tags. Comment out this. First is headings. Okay. Heading HTML provides six types of the heading tags, which basically means H1, H2, H3 to H6. Every H1 tag has a different meaning and different font size, as you know. So start with the H1. Heading 1. Hit enter. Refresh my page. It's showing me in the bold text. Okay. For every I want to refresh my page, है ना? मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है हर बार, तो मुझे नहीं चाहिए मैं जब सेव करूं मेरी फाइल तो अपने आप वो वेबसाइट लोड होनी चाहिए. तो इसके लिए VS Code provides us with extensions. Go in the extension sector. Here it is, and type live server. Live server type करो.
और जो पहला है ना वो ऋत्विक डे वाला, वो इंस्टॉल करना है. आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट. अंडरस्टैंड लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है वीएस कोड में. सीएसएस सीएसएस कल होगा. वोल्ड है सीएसएस. Please explain about UTF-8. UTF is basically a character encoding which tells the browser that we are uh, UTF-8 having all languages, human speak languages inside it, and it will tell the browser that I'm going to have this language inside my code and display it accordingly. Don't miss what we can say. गलत सब मत प्रिंट करना. तो UTF-8 का मीनिंग वही है कि उसमें जो ह्यूमन स्पीक करते हैं वो सब लैंग्वेजेस इंक्लूड है. सो हम अपने कोड में कौन सी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि चाइनीज, अरेबिक, कौन सी भी लैंग्वेज. H1 is larger, H6 is smaller. Yes. Understand what is UTF is? Akshar? Sorry for the late replies. Are you also covering a backend? Backends JavaScript. I'm not going in the JavaScript in depth. We are covering our project in HTML and CSS, which is a responsive website. I'm telling you this. So, are you guys with me? Have you installed that extension, live server extension? So let's just go ahead. So I'm just writing all tags, heading 2, copy this, paste it 4 times. Okay. H3, H4, H5, H6. Okay. I'm telling you this shortcut. Just select one text you have to change and just hit Control D to add next text. When you select H2, I entered Control D. I pressed Control D and next H2 has selected. And then I change it with H3. But now I want it H2 only. Okay. So I just pressed a Control S. I just pressed a Control S. Okay, let me just open it in live server. When you install a live server, just open your file with the live server. Okay. And now you can see it is not showing my folder path. It is showing a different path. So these are the headings provided by the HTML. Let us go ahead with paragraph. What is next? Let me see. The lists are there. Okay. Lists are there. So let's just go ahead with the list. What is list provided by the HTML? So list is of 2 types. Ordered list and second one is tell me Gana about this. Unordered list, right. तो हमारे पास 2 तरह के लिस्ट होते हैं. एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है.
ordered list. पहले देखते हैं ordered list क्या होती है. Ordered list के लिए tag होता है OL. Okay, just type OL and hit enter. This is the shortcuts of using VS Code. You just type OL and hit enter. It will create the tags for you, opening and closing tags. Okay. Inside the ordered list, we have the tag of name LI, that is known as list items. So let's just add some list items. What should we add? Let's take a special forces name. First one is para. This is the special forces name. In Indian Special Forces names I'm writing here. So second one is Bhatak. The third one is what is Marcos. Okay. When I hit save button, it created a ordered list for me. The default order is 1 2 3. If I don't want 1 2 3, I want it in we can say ABCD format. So I should type A. Okay, when I hit save button, it shows me in the ABCD format. Okay. Next, I don't want it to start with the A. मेरे को ये चाहिए कि ये C से start हो. तो इसको एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है start. और ये एक न्यूमेरिक नंबर एक्सेप्ट करता है, जैसे कि C is third letter. So I hit third and save the page. So it starts with the C. Okay, understood? Understood? Okay. Go ahead. Unordered list. Let me just copy this and paste it here. Control D and UL. Make it UL. UL tag doesn't contain these attributes. Okay, because it is already unordered. So when I hit enter, when I hit save button, it's showing me a unordered list. It contains a type attribute actually. Type attribute contains square. Yeah, it's showing me in the square. And this was a disk format. Disk. Okay, this is the disk. It has two types. I'm knowing. So next is paragraph. Paragraph. So paragraph is done by using the p tag. Just type p and hit enter. I'm just having some dummy text here. So this is my paragraph. I'm saving this. So this is the para. And in HTML, every tag has a opening and closing tags. Okay. So you can see I'm using this tag H1, O, OL, UL, P tag. It has a closing tags. है ना? But HTML having some tags which doesn't contain any closing tags. Any knowing about the tags which closing tag for them? How can we add a dummy tag? What you are telling? Dummy text. Okay. Just type LO and hit enter. LO. Lauren. This is word
and hit enter. It will create a dummy text. Just tell me, guys, are you known about the tag that don't contain a closing tag? Yes, break tag. More, more. HR tag. Yes. There is also don't have a closing tag for it. So I'm just having a HR tag. HR tag stands for the horizontal rule, which creates a horizontal line for me. Okay, I'm just giving this line to breaking my various tags. So it will be a very nice formatting. Uh, HR. Setting this. Okay. It's 3 paragraph. Okay. I'm not doing this formatting for now. Go ahead. Next one. What is the next in our list? Is the hyperlinks. Okay. What is the hyperlinks? What is hyperlinks? Which renders you in the new page, है ना? Which renders you on the new page. Jump to the another page. Yes. So how we can add the hyperlinks in our code? कैसे ऐड करते हैं? कौन सा टैग होता है उसके लिए? उसके लिए एक फेमस टैग होता है which known as anchor tag. With shortcut is A. Just type A and hit enter. Let me just ask you guys, are you guys with me doing this all? You all are doing this? Yes, yes, very good, very good, very good. Okay. ऐसे तो हमारा बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा. Good students. Okay, anchor tag is there for the hyperlinks. तो anchor tag में होता है कि anchor tag के लिए एक required attribute होता है which is known as the href. That is hyperreference. Hyperreference is known for. Um, yeah, hypertext reference. Hypertext reference. So here we have to provide a link of the. We are providing here a hash to go at top of our page, and I'm giving Google. So I'm writing a Google. मुझे इधर Google का path देना चाहिए. So https google.com. Okay, I'm hitting saving, and this is creating a link for me, which is underlined text and which is in purplish color. Okay, this is the anchor tag. So when I click on this Google, it reloads to the Google page. Okay, it is loading in that page only. है ना? मैंने जब गूगल पे क्लिक किया, ये ने इसने इसी वेबसाइट इसी पेज को रिलोड कर दिया गूगल की साइट पे. बट आई डोंट वांट दिस टू हैपन. मुझे ये नहीं चाहिए. मुझे चाहिए कि ये अनदर पेज पे जाए. सो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है टारगेट. एंड ये अब हमको एक 4 वैल्यूज देता है. ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप. जब हम ब्लैंक यूज करते हैं तब ये नेक्स्ट टैब पे खुलता है. ठीक है, अब देखते हैं. ये इंग्लिश हिंदी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मुझे. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. आप समझ लोगे, है ना गाइस? आर यू गाइस विथ मी? आर यू गाइस विथ मी? यस, थैंक यू सो मच. ओके, जब मैं इधर गूगल पे क्लिक करूंगी तो ये नेक्स्ट पेज पे लोड होगा, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टारगेट एट्रीब्यूट, this is going on the next page. Sorry, blank at value, it is going on the next page. अपनी वेबसाइट वैसी वैसी रहती है.
Let me just comment out this. I'm giving this document to you guys if you need this. Okay. So that's why I'm just formatting my code that you will understand what is inside, what is there. Okay. So we are done with the hyperlinks. So what is remaining hyperlinks? Hyperlinks का इतना ही होता है. इसके इसका एक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होता है. We can hover on that attribute and we can read out of here. So it basically contains a URL to the page we have to render to. Okay. File path is also there, so we can use hash also to go to top of your current page. Okay. So these are some basic of the anchor tag, and you guys must be getting bored for this, but let me tell you one thing. When you go in interview phase now, no one will the interviewer ask you from the basic questions. Okay. When you are going for the web development interview, they ask you for attributes. What is attributes? What is anchor tag attributes? What is required? What is not required? So these basics we are stuck there. So we don't know basics. We know that anchor tag is used for the hyperlinks. We can give the URL in the href, but we should know this href attribute is required attribute of anchor tag. So this is the basic you should know. And when you go in the interview phase, you will experience the benefit of this basics. Okay. Hmm. Let me clear one thing. Why the HR tag don't have a closing tag? Can anyone tell me why HR tag don't have a closing tag? Why HR tag don't have a closing tag? The reason behind it. I use a link tag in place of a link tag. I'm not aware of link tag. Sorry. Is there? Yeah, link tag in. Okay, okay. Link tag is there. Yes. That is a self-closing tag. Tag is a self-closing tag. This is an empty tag. Yes. Just it don't contain any contents inside it. हमने कुछ लिखा है क्या इधर? जैसे कि हमने ए टैग में लिखा है, ये क्लोजिंग टैग के बीच में हमने गूगल लिखा है, तो ऐसे कुछ है नहीं ना एचआर टैग के लिए, तो इसलिए इसको क्लोजिंग टैग देने की जरूरत नहीं है. वैसे भी आप दे सकते हो क्लोजिंग टैग, बट इट्स नो ऑफ यूज. ओके. इमेज टैग भी है, IMG टैग. उसके लिए कंटेंट नहीं होता है, तो उसके लिए क्लोज टैग देने की जरूरत नहीं है. So let's just move ahead fast. So next are the image. Okay, images. How to import the images? Images. Mm, image. We have the image tag for that. Image tag has two required attributes, that is source, src, and the alt. Src is known for the image source where the image is stored. So right now I have one image with me. Let me just take that. Okay, asset. This image. Copy this image. Mm-mm.
just folder inside it. Folder name assets, and inside assets, let me paste that image. You guys now download one image. इधर URL डालने के लिए इमेज चाहिए, आप डाउनलोड करो इंटरनेट से. I have already downloaded, so I have imported in asset folder. So here you can see asset folder is there, and inside it we have this image of space. Okay. So here I should import the file path of that image. Okay. So where it is dot slash in the asset folder and this image.jpg file. Okay. As soon as I save this file, the image is loaded for me. Okay. Why this is HR is here? Why? My laptop charging. Okay, HR, because I'm not giving it brackets. So now it is clear. So are you guys understand how to import an image? So, screen is not visible. Okay, let me share my screen. Sorry for the inconvenience. Sorry. Now my screen is visible. Is my screen visible? Okay. Now it is visible. Okay. So let's just go for the image. Have you understand how to import an image, guys? You all, ma'am, repeat. Okay, yes, I'm repeating. Uh, understand this. How I have uh, displayed this image on our web page. I just create an image using the image tag. There is an image tag for that. Image tag use करके. So let me just वापस करती हूँ आपके साथ, ठीक है? I just use image tag, hit enter. ये image tag के लिए दो required attributes होते हैं. First is resource. उसके लिए path चाहिए होता है image का, where the image is stored, and we can use URL also for that. But I have already downloaded one image. This is the space image, and I am using that file path. I have this image. मैंने ये अपने day 1 फोल्डर में एक फोल्डर बनाया एसेट्स नाम का, उसमें वो फोल्डर को पेस्ट किया, उसमें वो फाइल को पेस्ट किया इमेज के. अंडरस्टूड? एसेट फोल्डर बनाया day 1 में, जो हमने day 1 फोल्डर बनाया था, उसमें और एक एसेट नाम का फोल्डर बनाया, उसमें वो इमेज को पेस्ट किया. ठीक है? इधर दिख जाएगा आपको पेस्ट होने के बाद. इधर एसेट फोल्डर है और उसके अंदर ये देखो, ये day 1 का फोल्डर है, उसके अंदर एसेट का फोल्डर है और उसमें एक इमेज है. ये इमेज है, देखिए. दिस इज द इमेज विच आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. एंड अभी मैं इसको सोर्स में डालने वाली हूँ, इस फाइल का पाथ. मेरी स्क्रीन विजिबल तो है ना? हाँ, ठीक है. My picture for the yes. I have just downloaded in a hurry, so that's why I have not renamed it. But you can rename it. Okay, rename it. Its name is very dangerous, है ना? What is its name? Let me just add that image, asset, and this image. Okay.
all ABCD is there. 1, 2, 3, 4 is also. ठीक है? So I have uh, imported that image, and when I save this file, the image is loaded on the web page. You guys able to see this image? Let me just. Okay, now looking great. Okay. So alt alt tag alt attribute किस लिए होता है कि इन केस आपकी इमेज अगर लोड नहीं हुई वेब पेज पे, ठीक है, अगर मैंने इसका जेपीजी है ना ये, तो मैंने जेपीईजी कर दिया और इसको सेव कर दिया, तो मेरी इमेज गई, मेरा वो जो मैंने टैग लिखा था इमेज, उसका भी नामो निशान मिट गया, जैसे कि इमेज कोई है ही नहीं इस वेब पेज पे, है ना? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब मैं इमेज टैग यूज कर रही हूँ तो वो समझ आना चाहिए कि वेबसाइट वेब पेज पे कि मैंने इमेज टैग यूज किया है, पर वो दिख रहा नहीं है वो अलग बात है, पर यूज किया है वो तो दिखना चाहिए ना कि किया है बाबा यूज। तो ये होता है कि जब आपने फाइल को लोड होने में कुछ प्रॉब्लम आई, अगर नाम गलत हुआ, अगर एक्सटेंशन गलत हुआ, तो वो इमेज लोड नहीं होती है वेब पेज पे प्रॉपर। तो उसके लिए ये ना ये टैग होता है, ये एट्रीब्यूट, सॉरी आई एम अगेन एंड अगेन कॉलिंग इट टैग, इट इज एट्रीब्यूट। ओके, it is attribute defines a alternative text description of the image. Okay, you just need to hover on the alt, you will see these descriptions over here. वो बता रहा है कि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज का। अगर वो इमेज लोड नहीं हुई तो ये बताता है कि व्हाट वाज द इमेज एक्चुअली। दिस इज आई एम राइटिंग अल्टर टेक्स्ट, दिस इज space image, space picture. Picture is very suitable word for it. Okay. जब मैंने फाइल का नाम गलत कर दिया था, इसमें एक टूटी फूटी एक फोल्डर जैसा कोई आइकॉन है, पिक्चर जैसा, और इधर इसने मेरा अल्टर वाला टेक्स्ट लिख दिया कि हाँ मैंने टेक्स्ट इमेज को दिखाया है वेब पेज पे, पर एक्सपेक्शन एक्सेप्टेड टेक्स्ट व्हाट वी कैन से कुछ रीजन के वजह से वो इमेज लोड नहीं हो रही है, तो मैं अपने इमेज का फाइल चेंज करती हूँ। ओके, सो नाउ we are clearly visible this image. So let's just go ahead. Uh, are you guys with me? Have you done with that image tag? What is the difference between attributes and elements? Okay. Attributes gives the more information about the elements. What is known as elements? Elements are nothing but a tag. Okay. So this is the HTML is a tag, or we can say it is the element, and this is the language, which is attribute, which is giving a HTML tag of additional information. What is it? This is the HTML, and we are using a language of English. So this is. Let me just have notepad. I think I have closed my notepad. Let me just add in heading tag only. Okay. Here I'm writing down in comments. HTML. HTML is nothing but a tag. Okay, I am taking example of this line, line number 2. I am taking example of this line, line number 2. Okay, so HTML is tag, lang is attribute, which gives more information to that element or a tag we can say. And last one is en, which is the value of that attribute. En is value of attribute. Okay, understood? Understood? किसने पूछा था मेरे को? Set a background image of the web page. What is the using CSS?
Using CSS, very easy way to set a background image for a web page. We will see in the tomorrow's session. CSS will be tomorrow. Okay. So let's just go ahead. What is next? After images, there are table. So let's just fastly cover up this. What tables? Tables. So table. Mm, how to make a table in HTML? This would be a question. Okay. So by using like how we create an image in the HTML by using the image tag. How we create a hyperlinks in the HTML by using a anchor tag. पैराग्राफ के लिए भी p टैग है, उसके इनिशियल से वो टैग के नेम होते हैं। तो टेबल के लिए क्या होगा? टेबल के लिए क्या टैग नेम होगा, बताओ मुझे। Why we use div tag? Div tag is used for the container. So when we develop a proper website now, in the third day of this bootcamp, when we start with our project, we 90% we will work on the div tag. So in that lecture, you will know about the div tag. What is div tag? And it will be a very interesting when you join the third day session now. When we create our website, I'll मैं आपको ना ये सेशन एंड के होने के टाइम में बताऊंगी आपको कि हम क्या बनाने जा रहे हैं थर्ड डे पे, ठीक है? तो अभी के लिए ना ये क्वेश्चंस मत पूछो, मैं आपको बताऊंगी कि यस यस टेबल टैग होता है, ठीक है? तो टेबल टैग होता है, वेरी गुड। टेबल टैग, टेबल टैग यूज करके हम टेबल बनाते हैं HTML में। ओके, आपको कुछ शॉर्टकट्स मैंने जो बताए अभी तक, एक दो शॉर्टकट बताए मैंने, सब समझ आए क्या? क्योंकि ना ये VS कोड में सब कुछ प्रोवाइड किया है ना हमको, तो सब टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी स्टार्ट ही हुआ है तो वो डिस्कशन आया है। तो जब हम स्कूल में थे ना तब कंप्यूटर का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट था। तो उसमें हमको एक बेसिक HTML सिखाते थे। मतलब सब टाइप करके HTML क्या है, हेड टैग, तो सब opening that we can say triangular braces and type HTML. So this was very time consuming and irritating. But now everything is in our hand, as these VS Code providers with the very much we can say uh, बहुत ज्यादा इनोवेशन आए हैं। तो हमको ज्यादा कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट हमने एक समझ हमको एक टाइप करना है कि एच, तो हमको ये कितना सजेशन देता है, H1 H2 H3 सब एच नाम के जो जो टैग्स अवेलेबल है HTML वो सारे दिखा देता है कि क्या क्या है, ठीक है? तो इसका जो यूज होता है ना वो, सो मेक अ वर्थ यूज ऑफ इट। सब शॉर्टकट्स है, सब याद रखो। लिंक्डइन आईडी वो सब आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएगा, मेरा लिंक्डइन आईडी भी मिल जाएगा। ओके, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग्स गाइस। ये सेशन एंड होने के बाद ना सब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम, ठीक है? अभी जस्ट फोकस ऑन दिस व्हाट आई एम टीचिंग टू यू, ओके? सो टेबल, let's just create a one table fast. So table has okay, ऐसे नहीं आएगा ये, let me just open my paint। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं सिर्फ आपको टैग्स बताऊंगी ना, ये तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे कि टैग्स क्या है। टेबल के लिए ये टैग है, उसमें क्या है, TR है, TD है, TH है, तो ये सब होगा। तो एक दूसरा मोटिव मेरा ये है कि आपको उसका यूज भी पता, मतलब क्यों है वो, ये भी पता होना चाहिए। तो मैं इधर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है?
ये होता है क्या हुआ ये, बहुत टाइम के बाद ये पेंट यूज कर रही हूँ मैं। ओके, समझो इसको कि ये है अपना टेबल, ये इसकी बॉर्डर है, ठीक है। तो टेबल कैसे होता है कि सब रो फॉर्मेट में होता है टेबल में, ओके। हम कुछ ऐसे ऐसे लिखते हैं, कॉलम्स अलग होता है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, हम तो डेवलपर से है ना, तो हमको रो कॉलम में ही सब कुछ है हमारा डेवलपिंग का। तो रो क्या, टेबल क्या होता है, रो और कॉलम का मिक्सचर होता है। पर एचटीएमएल में रो में काम करते हैं सब, टेबल सब रो में काम करते हैं। अगर आपको डेटा भी फिल करना है ना, तो आप रो वाइज डेटा फिल करोगे, ठीक है। सो ये तो अपना हो गया हेडिंग। फिर उसके बाद आता है, अरे अरे ये क्या हो गया, ठीक है आप समझ लो। ये होता है उसके जो कंटेंट्स है वो फर्स्ट, फिर सेकंड कंटेंट फिल करना है तो अलग रो बनाओ, फिर थर्ड कंटेंट फिल करना है तो अलग रो बनाओ। तो ऐसे होता है एचटीएमएल में टेबल वर्क, रो वाइज टेबल वर्क होता है। जैसे कि फर्स्ट ये हेडिंग है, तो मैंने इधर डाल दिया सीरियल नंबर, इधर डाल दिया नेम एज और समथिंग मोबाइल नंबर। सो सेकेंड रो पे मुझे अलग एक रो बनाना पड़ेगा कंटेंट डालने के लिए, कंटेंट्स होगा इधर, ठीक है। लेट जस्ट मेक टेबल फास्टली। सो कैसे होता है कि रो वाइज होता है, तो रो के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है टेबल रो, TR, ओके, इट स्टैंड्स फॉर टेबल रो। Let's just create a table row of um, serial number, serial number का एक टेबल रो है। नो 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 नो, टेबल रो में कैसे डेटा आएगा, टेबल रो बनाई तो डेटा कैसे डाले, डेटा डालने के लिए क्या टैग होता है, टेबल डेटा, ठीक है। वेरी सिंपल, जब आपका जो वर्ड ही होता है ना, वही टैग का नेम होता है हर बार। जैसे भी आप भी जितने भी बार देखा ना कि आपका जो कुछ यूज करना होता है, जैसे कि अपने आपको टेबल यूज करना है तो टैग नेम क्या होगा, तो हम सर्च करेंगे टेबल ही होगा क्या। फिर हमको रो ऐड करनी है तो क्या होगा, रो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, टेबल रो होगा, टेबल रो का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, TR होगा। तो ऐसे ही सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सीरियल नंबर, ओके। लेट जस्ट कॉपी दिस table data and paste it for 4 times because we have, ओके नेम ऐड करें, करे क्या नेम ऐड, तो नेम ऐड करते ही है, चलो नेम ऐड किया। और क्या होता है कॉलम नेम, बताओ बताओ जल्दी बताओ, मुझे याद नहीं आ रहे क्या, टेबल कॉलम नेम्स क्या ऐड करें, कॉलम नेम्स क्या ऐड करें बताओ जल्दी, कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, नेम हो गया, आईडी, एड्रेस, नेम, एम्प्लॉय आईडी, yes yes yes, very much responses are there. Let me just choose any one of that, just add age, किसने बोला था एज, बोला था क्या किसने एज, हाँ बोला था निसर्ग, ठीक है। फिर लास्ट क्या होगा, एड्रेस होगा। मैं एक एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ, परमानेंट, परमानेंट स्पेलिंग परमानेंट, राइट, just ignore my spellings, yeah, permanent address, okay. And the last one is current address, okay. Just save this and let's just see what happens here. Okay, have you guys able to see this, our first row is there. Okay, so let's just copy this row and paste it for 3 times because we have the 3 data inside it. अभी सब कुछ हाँ, तो एक एक चीज है, अगर जैसे ठीक है बाद में बताती हूँ मैं, पहले अपन ऐड करते हैं, सीरियल नंबर होगा 1 1 2 3, name, let me take your names. Last one, who is the last one,
table th, yes. I'm not forgotten this. This is in my head, but मैं जस्ट बाद में यूज करने वाली हूँ. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्यों हम यूज करते हैं. जस्ट पता है इसलिए आप यूज करना है, ऐसे नहीं होता है ना, कि आप पता होना चाहिए. हिमांशु, देन वी कैन मुस्तफा, देन शाकिर. ये 3 नेम ऐड करती हूँ मैं भी. चलेगा ना आपको? If spelling have been mistake, please take care of mine. Okay, what is the spelling? Okay. Okay, there is no spelling mistake. Okay, so 21, 22, 23. This is just for my my feasibility. You are not 23 years of age. So permanent address is something Mumbai. Current address is Pune. Permanent address is Pune. Current address is something Pune. Permanent address is Nasik. Current address is Mumbai. Okay, just save this and let's just see what happens in our page. Okay, it has created a table for us, and it is not in the formatted which is look like a table. It's just separated by columns, but it's not showing us a proper format of tables, है ना. हमको जैसे टेबल चाहिए वैसे नहीं दिख रहा है ये. तो इसके लिए ही होता है टीएच टैग, जो कॉलम नेम्स को हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि कॉलम नेम्स तो एक बोल्ड हाईलाइटेड होना चाहिए ना कि क्या कॉलम्स है अपने टेबल में. तो उसके लिए होता है. Let's just make it th. Okay, have you seen guys? मैंने पहले td को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल डी किया जब तक मुझे चाहिए, और फिर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया th से. नाउ आई एम सेविंग दिस एंड यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, th has created a text which is in bold and which is aligned a center at the column of the column. ठीक है, इसने हमको सेंटर में लाके दिया है. तो अभी एक चीज है, अभी ये टेबल तो सबको आता होगा, पहले भी किया होगा आपने. इसमें आप दे सकते हो. लेट मी जस्ट, ये नीचे वाला दिख रहा है क्या आपको? टेबल जो हमने वेब पेज पे क्रिएट किया है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है टेबल वो, कि मैं ऊपर लूं और इमेज को हटा दूं थोड़ी देर के लिए? चलो थोड़ी देर के लिए ना इमेज को हटा देते, कमेंट आउट कर देते. कमेंट आउट करने का एक शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, फिर ये कमेंट आउट कर देगा. और हिट एंटर, हिट सेव. सेव करो, हर बार मुझे ये आना. ओके ठीक है, अभी दिख रहा है ये टेबल. तो इसको ना ये देख रहे हो आप, ये पुणे पुणे, ये 2 पुणे. तो मुझे नहीं चाहिए ये 2 पुणे हो, क्योंकि पुणे पुणे मुझे डबल दिखने मिल रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं इसको, कौन से में है वो, इधर है ना. तो टीडी में हम यूज कर सकते हैं ये 2 रो, 2 कॉलम, सॉरी ये 2 कॉलम्स है ना, एक करने, मर्ज करने. जैसे कि हम एक्सेल फाइल में करते हैं कि 2 कॉलम्स हमको मर्ज करने आते हैं, वैसे HTML ऑल्सो प्रोवाइड अस विद दैट एडवांस टेक्नोलॉजी. हम ये 2 कॉलम्स मर्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉलम स्पैन. हाँ, कॉल स्पैन and call span of 2. Just hit okay, call span of 2 and just remove this. Okay, let me just add a table. Border add करते हैं पहले. This is not a correct way to add a border. Okay, this is not a correct way to add a border. बट ये डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने बॉर्डर ऐड किए. ये रेड में आ गया, ये करेक्ट नहीं है, वो हम CSS में करने वाले हैं. ठीक है, पर अभी जो 2 पुणे पुणे आए थे, मुझे मुस्तफा का जो परमानेंट और करंट एड्रेस है वो पुणे ही है,
तो मुझे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये दो कॉलम को मर्ज कर दिया बाय यूजिंग कॉल स्पैन। एंड अब देख रहे हो कि दो रोज कौन से है क्या सेम। चलो हम हिमांशु और मुस्तफा का एज सेम कर देते हैं। चलो इसको 22 कर देते हैं। ओके, तो 22 कर दिया। और हमको ना ये दो रोज को मर्ज करना है। एज वाले जो 22 है ना, उसको इसी तरह से मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, रो स्पैन, रो स्पैन यूज करेंगे और स्पैन ऑफ 2 करेंगे, क्योंकि हमको 2 रोज मर्ज करनी है। ओके, और ये मुस्तफा का जो एज है ना, आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट नेम ना, इफ नॉट आई एम सॉरी, आई एम करेक्ट प्रोनाउंसिंग करेक्ट नेम मुस्तफा, एम आई? ओके ओके, चलो करेक्ट ही होगा। ठीक है। तो मैं इसको 8 से हटा दूंगी यहाँ पे और सेव करूंगी। ये दो रोज मर्ज हो गए। समझा आपको ये डिफरेंस? क्या क्या समझा इधर कि टीएच होता है फॉर हेडिंग्स, टेबल हेडिंग्स जो कॉलम के लिए होती है। टेबल रो हम टेबल के रोज ऐड करने के लिए होते हैं, क्योंकि एचटीएमएल में रो वाइज डेटा ऐड होता है, हम कॉलम वाइज डेटा ऐड नहीं करते। फिर टीडी होता है रो डेटा, जो हम एक्चुअल डेटा यूज करने वाले हैं वो होता है। फिर ये जो एक्स्ट्रा हमने यूज किया है कॉल कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, which is for merging the column and rows, the data of column and rows. Okay, we have just finished with our tables. Let's just take. Are you guys with me till now? Uh, are you guys? How to get the table border? Just go in the table tag and add an attribute name border and give the value of 1. It will add a border of 1 to your table. But it is not a correct way. I'm telling you, this is not a correct way to add a border. This is all happens with the CSS. Just because I wanted to show you the difference to you, I add the border like this. Okay. Are you guys with me? समझा आपको? आपने किया ये सब? किया क्या सच में? कि मेरे को सिर्फ यस यस मैम मत बोलो यार, मैम मत बोलो, आई एम नॉट मैम, आई एम नॉट मैम, आई एम नॉट टीचिंग एक्सपर्ट, कॉल मी मैम। ओके, किया ना, वेरी गुड वेरी गुड। बस 3-4 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब क्या बोर हो गए? 300 प्लस स्टूडेंट्स है, बोर मत हो जाओ यार, बोर मत हो जाओ, थोड़ा ही बाकी है अभी, फिर बाद में हम बातें करेंगे, फिर आप डाउट्स पूछ लेना कुछ, क्या करना है, सीएसएस होगा कि नहीं, जावास्क्रिप्ट होगा कि नहीं, वो सब बताएंगे। ठीक है, थोड़ा ही बाकी है अभी, कितना, 20, 8-20 हो गया, सिर्फ 20 मिनट में हो जाएगा वो कंप्लीट। ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज ये टेबल इमेजेस डबल डबल हो गया क्या? ओके, स्टाइलिंग टैग्स, स्टाइलिंग टैग्स। सो स्टाइलिंग टैग्स वैसे तो लेने की जरूरत नहीं है, वो सीएसएस का पार्ट है। पर है ना, मुझे हाँ, इसमें ना एक इम्पोर्टेंट चीज है स्टाइलिंग टैग में, वो शो करनी है, इसलिए मैं स्टाइलिंग टैग्स ले रही हूँ। ठीक है, स्टाइलिंग टैग्स। स्टाइलिंग टैग्स कौन से होते हैं? इधर मैंने लिखा है कि बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। बोल्ड के लिए क्या यूज करोगे? बोलो अभी, कौन सा टैग यूज करोगे बोल्ड के लिए? टैग, राइट राइट, स्ट्रॉन्ग बी, यस यस, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग टू यू। ओके, सब आएगा आपको, वो डिफरेंस समझ आएगा।
Okay, let's just focus on this thing. Styling tags के लिए bold के लिए B tag use करेंगे. Okay. Let me just, this is a bold tag, bold text. Italic के लिए हम क्या use करेंगे? I करेंगे. This is italic text. और underline के लिए U करेंगे. This is underlined text. Okay. ed लगाया मैंने उस पे. Let's just say this and have the difference of these. Why this is showing like this? Yeah. Okay. Let me just what happens. This is what we have written. Bold text, italic text. Let me just break through it. BR, BR. Okay. So bold text, italic text, or underline text. These are the styling tags in HTML. There are also a strong named tag is there. Strong, which is also behave like a bold text. Okay. This is strong text. Okay. This is also behave like a bold. You can see there is a no visible difference between. There is a no visible difference between bold and strong. There is a no visible difference between bold and strong, but there is a difference in the information that it contains. Okay, strong tells the browser that yes, these text in this these text written in the strong have the greater importance than the text is written in the bold. Okay, this is the difference between the strong and bold. Strong is just for the visual effect, and strong is for the intellectual effect, that it has a meaningful, it has a something very important in that text. You guys are understand? मतलब जो टेक्स्ट हमने स्ट्रॉन्ग में लिखा है ना, उसमें उसको कोई एक इम्पोर्टेंस है, बोल्ड से ज्यादा उसको एक इम्पोर्टेंस है इंटेलेक्चुअल फॉर्म में, नॉट अ विजुअल फॉर्म में. ओके. जो जब हम प्रोफेशनल लेवल की कोडिंग करते हैं ना, तो ये चीजें सब इम्पोर्टेंट होती है कि स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ बोल्ड करेंगे. बोल्ड तो सब CSS में हो जाता है, पर जब स्ट्रॉन्ग आया है ना, तो उसको एक न्यू इम्पोर्टेंस दिया है HTML में. ओके. सो अनदर टेक्स्ट इज देयर, EM नाम का. EM मीन्स emphasize text. So let me just emphasized text. So emphasized text is similar as a italic text, but similar as of with the bold and strong. Emphasized text has a greater importance than the italic text. Okay. So this is finished. Okay, clear? Let's just focus on the next. There is a forms. The forms concept comes in when you are building a website, like something is library management. आपने किया होगा है ना, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है उन्होंने किया होगा कि सेकेंड ईयर में बनाया मिनी प्रोजेक्ट नाम का, लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाया, फिर क्या बनाया, शॉपिंग वेबसाइट बनाई. तो उसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के पेजेस होते हैं. उसमें हम जो यूजर से इनपुट लेते हैं वो कहाँ किससे लेते हैं, फॉर्म्स यूज करके लेते हैं. फॉर्म्स होता है जो यूजर की इंफॉर्मेशन सर्वर तक पहुंच जाता है, सर्वर फिर उसको रिस्पॉन्ड करके वापस ब्राउजर को रेंडर करके देता है. तो फॉर्म्स में क्या होता है कि इनपुट टैग होता है, उसका टाइप टेक्स्ट आ गया इधर, तो मैंने इधर लिख दिया टेक्स्ट और आईडी दे दिया उसको एक नेम नाम का.
तो मैंने इसको सेव किया, तो इधर आ गया एक खुला बॉक्स आ गया जिसमें मैं टाइप भी कर सकती हूँ. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इनपुट टैग. I can write inside that square box. Okay, so now it is very clear. The next is I want to create some. Okay, let's add ID, name, email. So दो बॉक्सेस यहाँ पे आ गए. ठीक है, तो पहले में मेरे को क्या करना है कि इधर नाम ऐड करना है और सेकंड में मुझे ईमेल एड्रेस ऐड करना है. ओके, तो ये कैसे समझेगा? ये खुले बॉक्स है, इसमें कुछ लिखा भी नहीं है. कुछ समझेगा क्या मेरे को ये क्या करना है, किधर क्या लिखना है, किधर क्या लिखना है? मैं कुछ अलग भी लिख दूं तो कैसे होगा वो फॉर्म पे? जैसे कि हमको दिया होता है कि इधर नाम लिखो, तो वो कैसे यूज करते हैं हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. आई थिंक लिख सकते हैं एंटर नेम. ओके, हाँ, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ऐसे. और एंटर, क्या लिखा मैंने, एंटर ईमेल. ईमेल, चलो एंटर ईमेल नेम बी टैग. अरे बी टैग कैसे होगा? बी आर. ओके, एंटर नेम ईमेल. और उसके बाद मुझे चाहिए, हाँ, ईमेल का जो टेक्स्ट टाइप होगा वो ईमेल होगा. ओके, जहाँ पे लोग सिर्फ ईमेल ऐड कर सकते हैं. अलग टेक्स्ट ऐड किया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरा फॉर्म. एंटर पासवर्ड. So we are running very late. I think you guys are sticking to this boot camp, है ना? We placeholder, yeah. Yes, Himanshu. There is a name attribute like a space holder is there, but currently I'm not using it. So ID is pass. Why I'm giving this? I'm telling you fastly. Okay. So this is name, this is email. When I enter the email, it should only accept the email formatted text. Otherwise, it should not go ahead for submitting. Let me just add a submit button. Input, submit, value is submit. Okay. How I have add this shortcut is there. I just enter input. I give a colon and I just submit. What is the type of it? Okay. So it created all the necessary stuff for me. These are the shortcuts. We should use this. Okay. This I have created one page, one form, which accept the name, email, and password. And there is a submit button. But I want to tell you one thing. फॉर्म्स यूज करने के लिए हमको एक मेन चीज होती है कि फॉर्म नाम का एक टैग होता है. सॉरी, मैं भूल गई है. फॉर्म नाम का टैग होता है, उसमें ही हम ये भर करते हैं. ये आपको दिख जाएगा इधर कि मैंने ऐड किया है विदाउट फॉर्म यूज करके. पर जब मैं बैकएंड पे काम करूंगी ना, तब मुझे ये सब वैल्यूज चाहिए होंगी उधर उसमें वर्क करने के लिए, वो वैल्यूज पे. तो इसलिए फॉर्म्स, ये एक्शन फॉर्म वगैरह जरूरी है. फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बारे में बताती हूँ. एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है विच एक्सेप्ट्स द यूआरएल एंड अनदर पाथ ऑफ द पेज और द सेम पेज टू रेंडर टू इट. सबमिट बटन पे क्लिक करके क्या एक्शन परफॉर्म होगा वो हम इधर एक्शन पे देते हैं. और नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है मेथड नाम का, which has two basically values, get and post. Get method is for get and post. Get is unsecured and post is a secured method. So I'm writing a get here, which is not necessary for now, but I'm writing it here. Okay. I save this. I enter my name. Okay. I enter the password. Sorry, mail and password I have given. So why it is not giving me a password? Okay, जब हम पासवर्ड टाइप यूज करेंगे तब वो हमको हिडन कैरेक्टर्स देगा.
जब हम पासवर्ड टाइप करेंगे ना, वो हिडन कैरेक्टर्स देगा, वो शो नहीं करेगा जब हम टाइप करेंगे. तो आफ्टर सबमिटिंग, what I am getting is, where is, what I am getting this password, which is not a secured, which is because of this get method I have used. It is showing me in the URL directly, which is not secured. Which, this is the sensitive data है ना, जो पासवर्ड ईमेल मेरा नाम होता है वो सेंसिटिव डेटा होता है, वो ऐसे यूआरएल पे दिख जाए तो क्या ही होगा. तो ये गेट मेथड की वजह से होता है. गेट मेथड हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर कर पास करने के लिए नहीं यूज करते हैं. गेट मेथड पोस्ट यूज करते हैं. ठीक है, वी आर डन विद द फॉर्म्स. So next are the videos. Okay, how to add videos in HTML page. So let's just have the quick review of that. Okay, this is not very much formatted. Sorry. Uh, just add videos. Heading type of. Let me just tell you one thing, guys. When we use the heading tags now, we can on we this is the good practice to use h1 tag only for once in our web page. ओके, अगर मुझे ये पैराग्राफ भी लिखना है तो मैं h1 टैग नहीं यूज करूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी h1 टैग यूज किया. क्योंकि जब यूजर्स कौन सी भी वेबसाइट को विजिट करता है ना, तो वो हेडिंग है ना उनको अट्रैक्ट हो जाती है कि व्हाट इज द एक्चुअली दिस वेबसाइट मीन्स. हेडिंग टैग्स टेल्स अबाउट वो इंफॉर्मेशन. एक देखते ही आपको पता चलता है कि वो क्या है ये वेबसाइट. तो ये गुड प्रैक्टिस होती है कि h1 टैग रिपीट नहीं होना चाहिए एक पेज पे. वेबसाइट पे हो सकता है पर ये एक जो सिंगल पेज होता है ना वेबसाइट का, उसमें एक पेज में एक ही h1 टैग होना चाहिए. इट इज अ गुड प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग. ओके, नाइस. सो वीडियोज आर देयर. वीडियोस के लिए वीडियोस टैग है, एट्रीब्यूट है. सॉरी, हाँ टैग ही है. क्या बोल, वीडियोस है मेरे पास, वीडियोस भी है. So guys, you just go and download one video. We are using this in Ayush, it just for 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes only. Just stick to it. Uh, Otherwise, we will take this in next lecture. What guys? What is your opinion, guys? Just tell me. I know खाने का टाइम हो गया है. बोल दो क्या करें, नेक्स्ट लेक्चर में ले ले. Next lecture. You can continue. We will go with the can voting. Can start when okay. Next lecture मिलेंगे. ठीक है. Finish the video part. Nothing much is there. Just we have to add the source for the video. Just download it and import it in asset folder and just give the source here, the file path here. You will see the video is displaying on the page. Okay, Prathamesh, have you understand what I have told? Prathamesh, what about? Please explain it tomorrow. Ha. Okay, yes. So now, ask me questions. Apart from this, the bootcamp is over for today. We will see in next lecture about these videos, maps, and YouTube. These are very interesting part of the HTML, but just because of the time constraint, we have to stop here right now. ठीक है, कल देख लेंगे ये. कल आपको प्रेफरेबल टाइम 7 है या 6:30 बजे शुरू करें, क्योंकि CSS ऐसा है कि
CSS is the very we can say base of the web development in HTML. जब आपको CSS समझ आएगा ना, आपको 90% वेब डेवलपमेंट खत्म हो गया, ऐसे समझो. 6:30 को ले क्या कल? What is your opinion, guys? Yes, 4 लोग बोल रहे हैं 6:30. 6:30 is a preferable time for all or not? Team, anyone is there? Can we create one group for all the bootcamp attendees and tell them about the tomorrow's time, 6:30? We can start early, yes. Just because of the CSS is a very interesting and very lengthy part. I have to explain you from the scratch CSS. जब आपको CSS समझ आएगा ना, तो आपको क्या, आप कहीं भी मास्टर कर सकते हो वेब डेवलपमेंट में. 6:30 को, हाँ ठीक है. 6:30. Open the code. हाँ, I'll send this code file with you. आपका कोई ग्रुप बना है क्या? लाइक आप भी जो अटेंडीज है उन सबका ये फाइल मैं आपको सेंड करूंगी. कुछ टिप्स भी दूंगी, कैसे रन करे, कैसे लाइव सर्वर ऑन करे, कुछ शॉर्टकट्स है वो मुझे आप बताओ. जो अभी बात कर सकते हैं वो रुको, और जिनको खाना खाने जाना है वो मोबाइल पे ऐड करो, क्योंकि अभी सेशन तो खत्म हो गया है. आप मोबाइल पे सिर्फ सुन सकते हो कि क्या डिस्कशन होगा इस क्लास में कल के टॉपिक पे. फ्लेक्स बॉक्स, yes, all will cover in CSS. Box model and every part, crucial part in CSS. My position is ASC, that is a associate software engineering Accenture. No group you can create, ma'am. No group, okay. I'll ask the team. Okay. कैसे कर सकते हैं? इधर मुझे फाइल शेयर करनी आएंगी क्या? देखती हूँ. फाइल तो सेंड नहीं होगी यहाँ पे, तो ठीक है, कुछ करेंगे, टीम कुछ करेगी, आपको मिल जाएंगी वो फाइल. ओके, ये ड्राइव फोल्डर है. हेलो हाँ मधुनिका. ठीक है, मैं ड्राइव. हाँ 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 हाँ, मैंने ड्राइव की लिंक शेयर कर दी है, उस पे फाइल अपलोड कर सकते ठीक है ठीक है. ओके, where is the attendance link? Attendance will be recorded by our team. There is not much member, 78 is there. All have all attendance has been done, so no worry of attendance. But हाँ, listen one thing. आप जब 3 days का जब बूट कैम्प अटेंड करोगे तभी आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर आप आज आए, कल नहीं आए, फिर परसों आए, तो ऐसे मत करो, क्योंकि जो मैं HTML में सिखा रही हूँ, जो मैं CSS में सिखा रही हूँ, वो सब हम प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं. तो सेशन ऐसे बोरिंग नहीं होगा, आपको 3 दिनों मजा आएगा, आप कुछ सीख के जाओगे. प्रोजेक्ट भी होगा आपके पास एक. मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाली थी ना. Let's just stick to this bootcamp. I'm just showing you my project. Project. Okay. So this is the website we're going to create on the 3rd day. All with the animations and all the effects of like this. These animation effects. Like this. This is the basically a portfolio website we are going to build. And this is purely based on the HTML and CSS only. We are not using any libraries, any extra, we can say, frameworks for this. We are just
creating this by using the HTML and CSS. So this would be a this like these animations we have done. We are going to learn. Okay. So are you guys interesting for this to create? Yes, yes. Uh, yes, guys. Now just let's just finish this first day of bootcamp. It was very great. You guys all are very understanding and response तो आपका अच्छा ही है समझ लेते हो क्योंकि हम जब अटेंड करते थे HTML के जब बूट कैंप्स और आपको एक चीज बतानी है कि आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे राइट तो आप ये 2 ही साल है जब आप लर्निंग कर सकते हो ऑनलाइन जैसे कि बूट कैंप अटेंड करना कौन सा वेबिनार सेशन हो फिर कौन सा बैठ के जो आप लर्न कर सकते हो दूसरों से ये सिर्फ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होता है जब आप लास्ट ईयर में जाओगे ना तब आप में से कोई एक भी कौन सा भी बूट कैंप अटेंड नहीं करेगा लिख के देती हूँ मैं not any one of you going to attend any boot camp in your last year so this is the good start to have your interest in IT sector. Tell us how to get our portfolio on Google. How we will deploy our portfolio on one domain. So session was amazing. Yes, yes. Session was very amazing. I had a very great experience with you guys. And just finish this and goodbye. Okay.